Assalamualaikum, this is Naeem Khiyani from the Art of Investing. Thank you so very much लास्ट वीक का प्रोग्राम पसंद करने का। लास्ट वीक हमने गोल्ड के बारे में बात की थी और काफ़ी लोगों ने उसके हवाले से हमसे काफ़ी सवालात किए ऑफलाइन, और आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे गोल्ड के हवाले से। गोल्ड अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं एंड बाय दैट टाइम गोल्ड वुड हैव बीन जो है वो 4000 से ऊपर जा चुका होगा बेस्ड ऑन जो प्रेडिक्शन है। गोल्ड 4000 हिट कर चुका है, 4060 गोल्ड ने हिट किया एंड इट्स कमिंग डाउन नाउ, क्योंकि वो यूजुअली अगर आप हिस्ट्री देखें तो वीक में एक दफ़ा गोल्ड की करेक्शन होती है एंड देन इट गोज अप। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। विल डिस्कस गोल्ड इन डिटेल थोड़ी देर में, लेकिन आज हम थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें भी डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के हवाले से एंड देन विल गिव यू मच मोर इनसाइट्स टू इट। टैरिफ का एक और जो है वो सिनेरियो आज आया है, तो वो विल डिस्कस दैट और विल डिस्कस कपल ऑफ अदर कंपनीज एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन। सो पहले हमारे पास है सिनेप्लेक्स। सो अगर आपको याद हो, कोविड में सिनेप्लेक्स वाज वन ऑफ द इंडस्ट्री या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाज वन ऑफ द इंडस्ट्री विच हिट वेरी हार्ड, क्योंकि सिनेमाज बंद थे, थिएटर बंद थे, देयर वाज नथिंग यू कैन डू। सिनेप्लेक्स स्टॉक प्राइस was down at around $3 or $4 at that time। जब हमने अपना आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग उस ज़माने में शुरू किया था तो वी गेव यू कि दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी टू गेट इन। इनफैक्ट देयर वर मेनी अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे लोगों ने बहुत जो है वो प्रॉफिट कमाया एंड दिस वाज वन ऑफ देम। इस वक्त अगर आप देखें तो सिनेप्लेक्स की जो बॉक्स रेवेन्यू है दैट इज़ टोटल अराउंड 37.7 मिलियन, और ये अप है फ्रॉम 35 मिलियन विच इज़ वेरी गुड फ्रॉम फुटप्रिंट ऑफ सिनेप्लेक्स परस्पेक्टिव, क्योंकि इनका जो कॉम्पिटिटर है अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स एंड अदर OTT प्लेटफॉर्म, जिसमें आपको जो है वो यू डोंट हैव टू गो टू द थिएटर एंड यू आर एंजॉयिंग एवरीथिंग एट योर होम फुटस्टेप एंड होम स्टेप। सो ये एक अच्छी चीज़ जो है वो यहाँ पे हो रही है। बट ऑन द अदर साइड जो बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू जो सिनेप्लेक्स कमा रहा है उसके, so that is जो थर्ड क्वार्टर में टोटल हुआ है 159 मिलियन विच इज़ डाउन फ्रॉम 174, और जो कुछ मूवीज़ हैं जो OTT पे रिलीज नहीं हो रही हैं एंड दैट्स द रीज़न सिनेप्लेक्स इज़ गेनिंग सम मोमेंटम राइट देयर। एक जो है वो कंजरिंग द लास्ट राइट्स, दैट वाज वन ऑफ द हॉरर मूवी विच डिडंट कम ओवर टू OTT और नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम पे, विच इज़ व्हाई यू आर सीइंग इट देयर। सो आज हम देखते हैं सिनेप्लेक्स का स्टॉक इस वक्त वो क्या कह रहा है। इस वक्त जो मार्केट रेट चल रहा है सिनेप्लेक्स का दैट इज $11.35। अगर आप मूविंग एवरेज देखें सो इट्स वर्किंग इन पैरेलल, और ये बाय द वे मैं 3 महीने का आपको दिखा रहा हूँ। 3 महीने पहले सिनेप्लेक्स का स्टॉक था $10.33 पे। इट्स मूविंग बिटवीन 10 and 12, दैट्स हाउ इट इज मूविंग राइट नाउ। जो इस वक्त की जो न्यूज़ आई है उसकी बेस पे हो सकता है कि ये $14 तक जाए, विच इज़ वुड बी अ गुड इन्वेस्टमेंट, and then you can earn around 5 to 7% or maybe 8% out of it, and you can take your profit out. So this is one of the opportunity which you can take. EPS इनका है -0.95, which means they are not quite earning anything out of their share. लेकिन अगर आप ये moving average देखें, so that is going in parallel, and this one is जो 50-day moving average है, it is going up. So looks like it कि based on जो हम देख रहे हैं data is gonna go up, but we'll see, and based on this news it will be impacted there as well. All right, coming back to our presentation, हमारे पास second जो है कंपनी वो है overall इस वक्त जो है वो एयरलाइन इंडस्ट्री थोड़ी सी चैलेंजिंग बिहेवियर में है। इट इज़ ड्यू टू द फेडरल गवर्नमेंट शटडाउन। US की फ़्लाइट्स लेट हो रही हैं, जो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इस वक्त हमने डेल्टा एयरलाइन और अमेरिकन एयरलाइन को अभी हम थोड़ी देर में चेक करेंगे, क्योंकि काफ़ी फ़्लाइट्स वहाँ पे जो है वो दे आर गेटिंग डिलेड और दे आर गेटिंग लेट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। सो फ्रॉम एयरलाइन परस्पेक्टिव अभी हम चेक करते हैं डेल्टा एयरलाइन का। डेल्टा एयरलाइन बाय द वे इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक in airline, and there are a lot of people who have earned a lot of good profit out of it. So इस वक्त अगर आप डेल्टा एयरलाइन का प्राइस देखें that is $59.55, ये by the way 3 महीने का है। 3 महीने पहले it was at $50.70, so you can see the gain of 17%
in 3 months. Moving average अगर आप यहाँ देखें तो that has been crossed, which means it's gonna go up. EPS is 6.90 and PE ratio is 8.39, which is less than 10. So we can look into that. Dividend 1.31%, and the last dividend date was coming dividend date was 16 October 2025. इस वक्त जो strong buy के ऊपर ये चल रहा है क्योंकि as I said, Delta Airline is one of the strongest one. इस वक्त आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट से कम प्राइस में इट विल गो एट अराउंड $70 और 71 based on the analysis what we are seeing right now. So this is the good buy. Next हम देखेंगे अमेरिकन एयरलाइन. अमेरिकन एयरलाइन जो है वो इस वक्त प्राइस है इनकी $11.62. अमेरिकन एयरलाइन पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आए हैं, इनकी डेट के ऊपर काफ़ी मसले हैं और इस वक्त आप देखें डेट टू इक्विटी रेशियो इंक्रीज ओवर पास्ट 5 years. So they have a lot of issues in their operations and operating income as well. EPS इनका 0.67 है, PE रेशियो 17.68 है. इस वक्त भी 11.62 के जो प्राइस है वो कम है इनकी एवरेज से, विच इज़ वाई यू आर सीइंग इट राइट नाउ. एवरेज ऊपर है ओवरऑल, इनका 12.26 चल रहा है. सो इफ़ यू वांट टू जंप इन, डू योर ड्यू डिलिजेंस, बट this I would suggest more on Delta rather than American airline because you'll get more buck on Delta rather than American. So you can do your due diligence before you jump in. अच्छा जी, coming back to our presentation, next हम बात कर रहे हैं अब alright, okay, so as April 1st को जब tariff involve हुआ था, so there were a lot of Canadian travelers जिन्होंने जो है वो अवॉइड कर रहे थे US travel and they were not doing it. इस वक्त अगर आप देखें तो 46% जो है वो इस वक्त कमी देखने में आई है from last year to this year where Canadians are not traveling to US. So there are a lot of potential from US perspective which US is losing because of Canadians are not going there. इस वक्त इस week एक मीटिंग हुई है बिटवीन कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर एंड US president, or most probably there might be some renegotiation of a deal coming in, and due to which Canadians will start traveling and will have a more comfort and flexibility to travel there. इसी वीक एक और भी डेवलपमेंट हुई है कि US गवर्नमेंट is to take 10% in Canadian mining company Triology Metals. अब ये आपको दिखाने का मकसद ये इसलिए है क्योंकि इस तरह की जो जब न्यूज़ मार्केट में आती हैं तो जो कंपनीज हैं उनका स्टॉक अभी आप देखिएगा कि वो किस तरीके से स्काई रॉकेटेड हुआ है. इस वक्त अगर आप ये देखें, सो ट्रायोलॉजी मेटल्स इस वक्त है 9.29 पे. एक दिन की अगर मैं यहाँ पे देखूँ या एक महीने के ऊपर देखूँ, इट वॉज एट $2. आप अगर ये न्यूज़ जो मैं आपको दे रहा हूँ ये आई है October 6 को. So right on that day, October 6 at around 3:30 p.m, the stock price raised at around from 2.93 to 9.97. This is almost 250% increase, and that's what as an investor we look out for. अगर इस तरह की कोई न्यूज़ है जिसमें US इन्वेस्टमेंट है, जिसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जिसमें कोई प्रोजेक्ट एक डेवलपमेंट हो रहा है, दैट्स व्हाट यू सी द प्राइस जंप इन दैट स्टॉक एंड यू विल सी राइट देयर द प्रॉफिट आउट देयर. EPS इनका -0.08 है, विच मीन्स दे आर नॉट अर्निंग एनीथिंग आउट ऑफ दैट शेयर. बट एज एन इन्वेस्टर, इफ आई वर देयर, आई वुड हैव जंप्ड इन राइट बिफोर दैट एंड देन टेक द प्रॉफिट आउट. And that's where you need to review the news which are being generated in the market ताकि आप जो है वो उसको right time पे capture कर सकें. So this is one of the example what I wanted to show you. इस वक्त इसकी price है $9.34. It's technically too late to jump in now because the things have already been pushed forward. अब अगर आपको jump in करना है तो just wait. If it goes down at around $6 or $7, that's the right time to jump in because then it will come back again based on, अभी तो सिर्फ announcement आई है कि 10% जो है वो जैसे ही contract sign होगा, management यहाँ पे आएगी, that's where you will see it will jump back again. But in next couple of weeks, keep an eye on this. इसका जो ticker है that is TMQ और ये Canadian
it's in Canadian dollars. So once it goes down, then that's the right time to jump in and break in and then come back again. All right, next हमारे पास है ओके सो नेक्स्ट हमारे पास है BMO. अच्छा, एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है जिसमें ये पता चल रहा है, BMO हैज़ डन रिसर्च आउट ऑफ इट, एंड उसमें ये पता चल रहा है कि इस वक्त जो 35% टैरिफ अगर अक्रॉस द बोर्ड लग गया, क्योंकि देयर आर स्टिल सम आइटम्स और सम प्रोडक्ट्स या सम इंडस्ट्री जिस पे अभी तक टैरिफ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये 35% अक्रॉस द बोर्ड सारे इंडस्ट्री पे लग जाता है तो वी विल बी इन द मॉडरेट रिसेशन फॉर अ शॉर्ट टर्म एंड 5% शिफ्ट ऑफ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ. तो विच मीन्स जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो चल रही है उससे 5% यू कैन वाइप इट आउट राइट अवे इफ 35% ऑफ टैरिफ बीन इम्पोज्ड. अब ये पता चलेगा इस वीक या नेक्स्ट वीक कि जो डील रीनेगोशिएट हो रही है उसका जो आउटकम है वो क्या निकल रहा है, और बाय November 1st we will be able to tell कि which way the Canadian economic growth is being heading towards. Real GDP decline हुआ है 1.6% on an annualized basis, which is way too big, क्योंकि इस वक्त कनाडा की मार्केट जो है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से it is trembling right now, and that's where a lot of things been happening, क्योंकि इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लंबर पे भी इस वक्त जो है वो टैरिफ लगा है, एंड इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन कनाडा. So that's there, and keep an eye on all the news which has been happening right now, क्योंकि based as an investor we need to jump in where you will see the value of any market, any company or any stock right there, so that you can jump in at the right time. और यही exactly हमने ट्रियोलॉजी मेटल्स की एग्जांपल में शो किया. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास Amazon, Meta एंड Alphabet. ये तीनों बिग टेक कंपनीज हैं, इनकी वजह से नेस्डैक जो है वो काफ़ी ऊपर रहा है लास्ट वीक, और इस वक्त की जो रिपोर्ट है वो ये है कि Amazon, Meta और Alphabet दे आर इन्वेस्टिंग हैविली इन AI टेक्नोलॉजीज, और हम देख भी रहे हैं देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स बीन हैपनिंग राइट नाउ. Meta ने जो है वो रे-बैन के ग्लासेस भी लॉन्च कर दी हैं, वो पहले किए थे लेकिन अब उनका जो है वो एक्सटेंडेड वर्जन लॉन्च हुआ है, and it's all based on AI. Similarly, Amazon is providing a proper infrastructure on AWS, which is उसके ऊपर जो है वो you can build a lot of AI based software, and that's what is being doing. And Alphabet, which is Google, is providing a lot of infrastructure along with a lot of softwares on AI as well, which अभी Google का जो है वो एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है Neo 3 वर्सेस जो उन्होंने बनाना का जो सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है फ्रॉम ग्राफिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दैट इज बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ हाइप देयर एज वेल. सो दीज थ्री कंपनीज आर गुड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव, बट यू नीड टू चेक वेयर एग्जैक्टली यू नीड टू गेट एन एंट्री देयर. सो हम ये तीनों कंपनीज को बारी बारी चेक करते हैं. Just so you know, what I am showing you right now is Nasdaq price, but they have a presence in Toronto Stock Exchange as well, and that will be much lower price than this. So 227 is Amazon right now. It's getting back to shape. 217 था September 25th को, and it is coming back. इस वक्त इनका जो 200 day और 50 day का जो moving average है, that is going in parallel. Amazon की जो EPS is that is 6.55 and PE ratio is 34. It's a strong buy because it will go up till 266 based on analyst recommendation. Next हमारे पास है Meta की जो इस वक्त प्राइस है that is 733.51. Meta इस वक्त डाउन है, अगर आप एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस वक्त इनकी प्राइस जो है वो डाउन है. इट वाज 703 on October 6. It is coming back now. It will go up to 867. It is a strong buy too. और 867 का मतलब ये कि by the time they will reach 1000, they will do a stock split, and that's what the history what we have seen. अच्छा, थर्ड है हमारे पास Google Alphabet. इस वक्त इनकी प्राइस है $242.21. अगेन इट्स अ बाय, but it's
market cap इनका 2.96 ट्रिलियन है, nobody can beat other than Nvidia to it, and analyst की prediction है कि it will go up along with it, और इस वक्त जो इसकी प्राइस है वो 242 है, जो कि मूविंग एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इट्स अबव द एवरेज राइट नाउ. So you need to, if you need to jump in, you need to check कि ये थोड़ा सा अगर नीचे आए, so then you can jump in, but this is a good buy. So all these three tech companies are not going anywhere and they will be there for such a long time along with Nvidia as well. All right, so this, अच्छा आखिरी में हम बात करेंगे गोल्ड की. इस वक्त जो गोल्ड चल रहा है, हम गोल्ड की इस वक्त जो है वो प्राइस देख लेते हैं. गोल्ड की प्राइस इस वक्त है 3,990. इस वक्त गोल्ड तो नीचे आया है. आज अक्टूबर 7th को, सॉरी अक्टूबर 9th को गोल्ड चला गया था 4,060 पे, और इट नाउ कमिंग डाउन एट अराउंड 390, जो आप अभी देख रहे हैं 3,991. इट विल कम बैक, क्योंकि जो गोल्ड की इस वक्त प्रेडिक्शन चल रही है, इट विल गो अप टिल 5,000 बाय एंड ऑफ दिस ईयर. 4,200 और 4,300 तो ये प्रेडिक्शन है कि प्रॉब्ली एंड ऑफ दिस मंथ या प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ तक गोल्ड जो है वो रीच कर लेगा, बट 5,000 इज द वन वेयर गोल्ड इज सेटिंग इट्स नेक्स्ट हाई. इफ यू वांट टू बाय गोल्ड, दिस इज द टाइम, बिकॉज गोल्ड इज कमिंग डाउन और थोड़ी सी प्राइस करेक्शन हो रही है गोल्ड में, एंड इट विल कम अप. अगर आप गोल्ड का एक महीने का रिटर्न देखें तो इट्स 8.38% और 3 महीने का रिटर्न गोल्ड का है 20%. So it is going up and it is going up very fast. As we are talking about gold, तो एक और कंपनी है गोल्ड माइनिंग की, कैनेडियन कंपनी है. इस वक्त इनकी प्राइस है $2.30. प्राइस थोड़ी सी कम हाई है, थोड़ी सी एवरेज से ऊपर है. अगर आप इनकी प्राइस अगस्त में देखें जब गोल्ड जो है वो रैली कर रहा था, इट वाज एट अराउंड $1.18. तो टेक्निकली 100% ऊपर आइए, 132% ऊपर आइए इन लास्ट 3 months. दिस इज द गुड बाय टू जंप इन. इस वक्त स्ट्रॉन्ग बाय है ये. अगर गोल्ड जो है 4,300 से ऊपर टच करता है, सो दिस विल गो अप एज वेल. सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू जंप इन. ऑलराइट, आखिर में हम देखते हैं एक्टिव स्टॉक. तो हमारे जो एक्टिव स्टॉक आज के हैं वो है टीडी. TD is at $112. No, Bank of Nova Scotia is at 89. TC Energy is at $73.90, along with Enbridge, which is at $67.32. Next हमारे पास है US stock. Nvidia is at 192. Nvidia आज से 3-4 दिन पहले was at 178. It is jumped back here. Tesla is at 435. Meta जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी 733, और Alphabet जो हम डिस्कस किया 242.21, along with Micron Technologies which is $192.33. So this was it folks. आज हमने डिस्कस किया गोल्ड, and one thing I would like to leave this with you. If you want to make money on gold, please do keep an eye on it because it is going up like crazy. आप सिल्वर को भी देख सकते हैं फ्रॉम कमोडिटी परस्पेक्टिव, बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर आर टेक्निकली रनिंग इन पैरेलल फ्रॉम परसेंटेज प्रॉफिट परस्पेक्टिव, बट दीज आर द टू सॉलिड कमोडिटीज व्हिच यू कैन चेक राइट नाउ. क्योंकि इस वक्त ग्लोबली गोल्ड की बाइंग काफ़ी हो रही है. चाइना इज बाइंग अ लॉट ऑफ गोल्ड एट दिस पॉइंट. इंडिया is buying gold too, and there are other countries who are investing in gold. So gold is going up from whichever analysis what we are seeing right now. इस वक्त correction होगी थोड़ी सी price की. That's what you need to check when exactly you need to jump in, but eventually that's what is gonna go there. So thank you so very much for watching The Art of Investing. Inshallah we'll see you next week. Until then, Assalamu alaikum.